Now, today we are going to start this chapter called Animal Kingdom. And again, I'm telling this chapter is very important in terms of its example. So, first of all, we will see the characteristic of animal whole together. Means what are the basic characteristics that is present in all the animals. Okay. So, first, each and every animals are composed of eukaryotic cells. So, animals characteristics. First point is what? That each and every animals are composed of eukaryotic cell. For this, no exception is there that animals are composed of prokaryotic cell. Each and every animal has eukaryotic cell. So all animals have first eukaryotic cells. Second one, all the animals are multicellular. There are no animals who are unicellular. So all the animals are multicellular. Next point, we can say that all the animals are heterotrophs. None of the animals are capable of making their own food. Okay, so all the animals are heterotrophs. Next, we can say that all the animal have their storage capacity and they store food in form of carbohydrate, or we can say glycogen in excess. Each and every animal have the capacity to store the food in form of glycogen or carbohydrate. So every animals have capacity to store food in carbohydrate form. So carbohydrate form, that is in glycogen. See, carbohydrate only have what? Glycogen in excess. All the animals have capacity to store the glycogen in excess. And next, all the animals are holozoic. Holozoic means they have holozoic mode of nutrition, taking the food as it is, and then inside the body whole mechanism is present for digestion, absorption and excretion of that food material. Okay, so these are what basic characteristic of each and every organism of animals. Okay, there is no exception that any animal is prokaryotic or any animal is singular. Okay, so every animals are eukaryotic, every animals are multicellular, every animals are heterotroph, that is they are taking food from any other plants, or we can say they are dependent on autotrophs. Then every animal has the capacity of storage of the food in form of glycogen, and then each and every animals are holozoic and they follow holozoic mode of nutrition. Now it is the basic characteristic. Now in this chapter we will see what we are going to study. First we will see animals, the features and the classification, means their level of organization, how are we going to classify based on their level. Then diploblastic and triploblastic organization, then coelom, body plan, segmentation. Ye 5 are the basic main features. Actually there are 7 basic main features. These are what? Germ layer is only, these are germ layers, and this is coelom. One more plan will be 1.6. Yeah, notochord is also very important for classification. Notochord and symmetry. So these 7 points we will take for classification of animals. That from porifera till the chordata, how animals have been classified, we will take these 7 basic characteristics. Apart from these 7 basic characteristics, there are many other ones which are smaller, like respiratory system, excretory system, and fertilization, and what are other processes. So that are some smaller points apart from these major points. Okay. Now in the non-chordata, we will get to study phylum Porifera, Coelenterata, one by one, Porifera, Coelenterata, Ctenophora. Here in each and every phylum you have to remember the examples along with their scientific name, because sometimes what happens, कभी scientific name पूछता है, कभी common name पूछता है. And most of the time common names have been asked, that what is the scientific name of this animal, or common name करके ही पूरा question ही है, match the column type करके. So each and every animal or phylum is having their own characteristic, own processes. So we will go through each and every phylums one by one. Now at last we will study the chordata. Then chordata is further divided into these tunicata, cephalochordata, vertebrata. Inside the vertebrata we will see 2 major superclasses, Pisces and Tetrapoda. Inside the Pisces we will study about fishes,
And inside the tetrapoda, we will study about amphibia, reptilia, aves, and mammalia. So this will be the whole chapter checklist that we will study in near future. Okay, because this is a whole broader chapter that we have to study, and most importantly, examples we have to learn, and we have to learn it by heart, because example of these chapters are very important. Now coming back to the slide, have you understood the characteristics? Sana and Faika, what are the basic characteristics of animals that is found in every animal without any exception? Okay, shall we go to the basis of classification? Yes, ma'am. Okay, so see, animals have been classified here. I'm going to explain with the slide only how animals have been classified. Animals have been classified on the basis of cellular then tissue. See, it is what subphylum. Yes, it is what subphylum. I think subphylum protozoa. Subphylum, sorry, parazoa, not protozoa. Subphylum parazoa is there, and this one is subphylum eumetazoa. U means true. These are what false, or we can say primitive metazoan. These are false animals, also we can say false metazoans. And these are true metazoans. U means what? True. So these are true metazoans. Now, coming back to the slide again, how many levels these have been divided. Now, under this parazoa and metazoa, now cellular level and tissue level, there is only one phylum which shows cellular level of organization, and that phylum is phylum Porifera. Then again, under the tissue level, we will see the organism where no body cavity is present, coelenterata and platyhelminthes. Then pseudocoelom is present, that means nematoda, or we can say annelida. Okay, two names are being given, annelida or nematoda. Also, then coelomate. On the basis of coelom, they have been further divided into annelida, mollusca, and arthropoda, and those which have well developed coelom means it is pseudocoelom, and it will be true coelom. True coelom will be where no notochord is present, echinodermata and hemichordata at the same time, hemichordata. And where notochord is present, only chordata. Under chordata, we will see protochordata and vertebrata. In this protochordata, two subphylum are there, tunicata and cephalopods. And this under vertebrata, we will see pisces, amphibians, reptilia, aves, and mammalia. See, each of these we will study in detail कि कैसे कैसे animals have been classified on the basis of cellular level, on the basis of germ layer, on the basis of body plan, on the basis of coelom, on the basis of segmentation, on the basis of notochord. Each and every characteristic we will go through, and we will see कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ division हुआ है. Okay, have you understood about this slide or this page? Starting three lectures are very important in understanding the whole chapter, so you have to listen very carefully about these 3 or 4 lectures. Okay, I'm going to start now. Basis of classification. Basis of classification. Now, as I have told, what are the 7 bases of classification? One will be level of organization. Second will be germ layer, that is either it is diploblastic or triploblastic. Third will be body plan, body plan. Fourth will be their coelom. Fifth will be symmetry. Then sixth will be segmentation, and seventh will be notochord. We will see one by one. First one is what? Levels of organization. So in animals, basically there are 3 level of organization. Okay, these 3 level of organization I have already written. 3 level of organization. Sorry, 3 or more 4. Cellular level, tissue level, organ level, and organ system level. So mainly we will see the 4 level. I have also explained, sorry, something has been fallen down. So I have also explained how we move from simplest to the complex one. So simple one is cellular one. Then from cell, when cell combine, they will form what? Tissue. Then tissue will combine to form what? Organs. Then organ will combine and form organ system. Then this organ system will combine and what form? It will form a whole new human being or whole new organism. So again, this there are what? Division. 4 division is seen. First one is cellular level, then second one is tissue level, the third one is organ level,
and the fourth and final one will be organ system level. Just give me a minute, students. So this organ level means cellular level means only cell aggregation of cell will be there, like this one. Only aggregation of some cells will be there, and then this aggregation of cells, that is multicellular cells, will form a whole organism. So only a single phylum is there which show this cellular level of organization. This phylum is what? This phylum is what? Phylum Porifera. Porifera. Then tissue level. Tissue level of organization will be shown by two of them, means two phylums. One is Ctenophora, another is Coelenterata. So abhi whenever you will go further in studies, ये Coelenterata and Ctenophora की जोड़ी हमेशा ही रहेगी. They will not break their pair. Okay, like we can say कि इन दोनों का जोड़ी लाइक अ बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडशिप है कि जहां कहीं भी तुम किसी भी लेवल का क्लासिफिकेशन या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखोगे, यू विल फाइंड Coelenterata एंड Ctenophora एवरी टाइम दे विल बी टुगेदर. सो टिश्यू लेवल में भी क्या है, दो एग्जांपल्स, फाइलम Coelenterata एंड Ctenophora. अब इस फाइलम के अंदर जितने एग्जांपल है, दैट एनिमल्स विल शो दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, देन ऑर्गन लेवल. Organ level, there is also one phylum. That phylum is phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes. And now organ level, organ system level. From Aschelminthes to Chordata, every organism or every animal show organ system level of organization. So from Aschelminthes to Chordata, every organism will show this organ system level of organization. अब cellular level में जो phylum Porifera है, इसका जितना भी example है, all of those animals will show cellular level of organization. Same ways Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes और Aschelminthes chordata में जितने भी examples आएंगे, any example will show their respective level of organization. So I'm just writing examples of phylum. Okay, you have to remember here because many times question has been asked, especially about this Platyhelminthes ki which type of organ level is shown by Platyhelminthes. Okay, is this point clear? Level of organization. Is there any doubt in understanding this point? Sana, Faika, is there any doubt in understanding this point? No, ma'am. Okay, so we will move to the second point. What was the second point? Germ layers. Germ layers. So basically, there are two germ layers which are found inside animals. One is diploblastic, other is triploblastic. And then which kind of animals show these kind of layers? I will write examples, then I will show you with the slide and diagrams how these are forming and what are these things. So first is what? Diploblastic, and second is what? Triploblastic. Diploblastic means two germ layer will be there. Diplo means itself what? Two. So two germ layers. And triplo means what? Three germ layers. Now, what do you mean by this germ layer? Can anyone tell me what is this germ layer I'm talking about? Sana, Faika, Purvang, do you know what is germ or germ layer? Okay. So, whenever, let me explain here. When zygote is formed, in the earlier stages after fertilization, when the zygote is formed, zygote, from this zygote 8-cell stage is formed. Then this 8-cell stage will form blastula. Then from this blastula gastrula stage are formed. Gastrula. So इस जो ये layer है ना, ये gastrula stage, this gastrula stage after this formation means 32 cell stage or 64 cell stage is gastrula. So ये जब gastrula बन जाता है ना, तो इस गैस्ट्रोइड स्टेज से मेनी लेयर्स डेवलप होते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड. सो इनसाइड आउटसाइड जो लेयर का डेवलपमेंट होता है, दोज लेयर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? जर्म लेयर्स. वी कैन से इनसाइड एंड आउटसाइड डेवलपमेंट ऑफ लेयर्स, डेवलपमेंट और you can say formation also. Those layers are called as what? Called as germ layers. And these germ layers are ectoderm. Ecto means outside. Endoderm means inside, and there is one more, mesoderm, which will be in the middle. So जब gastrula से ये ectoderm, endoderm और mesoderm को formation होने लगे, that stage we will call as germ layers, or those layers we will call as germ layers.
Now understood what is germ layer? Yes, Faika. What is germ layer? Understood now? Sana, what is germ layer? If you are not able to understand, you can tell me. I will explain once again. But don't keep quiet. Okay? Whether it is Faika, Sana, or Purvan. What is germ layer? Have you understood? Yes, ma'am. Okay. So again, coming back to the topic, diploblastic means those organisms which are having two germ layers, that is ectoderm and endoderm only. Those organisms are Coelenterata, Ctenophora. Okay. Example, Coelenterata and Ctenophora. And then those organisms which are having three germ layer, that is ectoderm, endoderm, and mesoderm, they will be from Platyhelminthes to Chordata. Means from Platyhelminthes till Chordata, triploblastic or three germ layer is been seen. Now in the slide, I have made diagram also here in this slide. I think no, here. This diploblastic and triploblastic is only what germ layer. So in this slide, if you are able to see the figure, see diploblastic is what? This layer only one and inside this two. This one is second layer and this one is what? First layer. So only two layer are present in this one. That is why we are saying this figure is diploblastic. Now here in this figure, see one layer is present, two it is in the center and the third layer is present. So three layers are present. That is why we are saying triploblastic. इसमें क्या है इस diploblastic वाले diagram में ही if you see there is one layer which is forming what outer side. It is what towards the outer side. एंड सेंटर में क्या है जेली लाइक स्ट्रक्चर. ये जो सेंटर में है ना ये क्या है व्हाट जेली लाइक स्ट्रक्चर विच वी आर कॉलिंग मीजोग्लिया. मीजोग्लिया इज व्हाट जेली लाइक स्ट्रक्चर. जेली लाइक structure. And then this one is what endoderm. Endoderm means inside the formation. It is forming towards the inside. So this will be what endoderm. Endoderm. Now in this figure, if you see there is one layer mesoderm which is formed in between this ecto and endo. और ये mesoderm जो भी form होगा ना तो इसका एक layer यहाँ outer side towards the ectoderm होगा and इसका दूसरा layer क्या होगा towards the endoderm. So it will form one layer inside the ectoderm and other layer outside towards the sorry, I said opposite one. One layer towards the endoderm and the other layer towards the ectoderm. Okay? Have you understood about this diagram? कि किस वजह से डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जा रहा है. एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फॉर्मिंग आर दिस डिप्लोब्लास्टिक इज फॉर्म बाय Ctenophora and Coelenterata and this triploblastic will be formed by from Platyhelminthes to Chordata. Okay, now coming back again this level of organization germ layer. Okay, now I'm going to ask most interesting question. Do you know about all the phylums? Means are you able to remember how many phylums are there? Sana and Faika and Purvan. Does everyone know how many phylums are there? 8. 8? No, 10. Around 10. Yes. So serial wise, can you name them, Sana? Because I'm again every time I'm writing examples and you will get confused. So serial wise, can anyone name the phylums? Every time I will speak कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. So you should be able to understand the phylums serial wise. Okay, the starting phylum is what? Porifera. Then second phylum is Coelenterata. Today I am writing the names, but tomorrow I'll ask that have you learned about these names or not. The third will be Ctenophora. Serial wise you have to remember Ctenophora. Then fourth is Platyhelminthes. Fifth will be Aschelminthes. Aschelminthes. Then Annelida. Annelida is also called as Nematoda. Annelida. Then Orthopoda. This Orthopoda is what? Orthopoda. This is the largest phylum. Orthopoda is what? Largest phylum. About 1/3 of Earth is covered by this orthopods. Largest phylum in the world. Now, eighth one is Mollusca. Mollusca. Ninth one is Echinodermata. Echinodermata. Then 10th one will be Hemichordata. Hemichordata. And finally what? Chordata. So this chordata is whole different level. यहाँ पे अभी क्या है ये phylums क्या है? Non-chordates. Non-chordates. So how many are there total? 10.
ये chordate is whole different level, so you have to remember till hemichordata. Serial wise, you have to remember the name. Tomorrow I will ask from each and every one. Phylum Porifera till hemichordata. Serial wise, you have to remember the name. Now, whenever I will say that from Aschelminthes till hemichordata or echinodermata or chordata, you must know that these will all included in this series. Okay. Now, again, coming back to the topic where we have stopped the germ layers. Now, the third point will be body plan. Body plan. So again, there are three different kind of body plan. One is cellular aggregation, other is blind sac body plan, and the third one is tube within tube body plan. What are these three? One is cell aggregate plan. Second one is what I told, blind sac body plan, and the third one is tube within tube body plan. Now again the examples are important. So cell aggregation will be shown by what? Cell aggregation means only cells come together and aggregate and form an organism. So now you understand cell aggregation is the most primitive one. It will contain what? They will contain poriferans. So phylum porifera. Because there is no tissue level, only cell are coming together and forming an organism. So poriferans are most primitive one. They will show cell aggregate plan. Now blind sac body plan again, Coelenterata ctenophora. Coelenterata ctenophora, but here will be a twist because blind sac body plan is shown by Platyhelminthes also. अब blind sac का यहाँ मतलब these are not blind, okay? Let me write, then I'll explain. Platyhelminthes. So this blind sac body plan means कि there is only one opening for both entry and exit of substances, food material, excretion भी उसी opening से होगा, ingestion भी उसी opening से होगा. So ऐसे type के opening को हम लोग क्या कहते हैं? Blind sac body plan. And this body plan is shown by these three phylums, Coelenterata, ctenophora and Platyhelminthes. Means only one opening is there for ingestion and egestion also. मीन्स एंट्री के लिए भी एक ही ओपनिंग है, एग्जिट के लिए भी एक ही ओपनिंग है. मीन्स समवट लाइक दिस. देयर स्ट्रक्चर्स आर राइट नाउ आई विल शो यू फिगर आल्सो. इफ दे आर लाइक दिस, सो इफ हियर इट इज द ओपनिंग, दिस ओपनिंग ओनली विल कंटेन, यहाँ से ही एंट्री होगा सब्सटेंसेस का एंड इसी ओपनिंग से एग्जिट भी होगा सब्सटेंसेस का. ओके, नाउ अगेन ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. आफ्टर प्लैटीहेलमिन्थेस व्हाट विल कम? Annelida. No, sorry, Aschelminthes. So from Aschelminthes to chordata, they show what? Tube within tube body plan. Tube within tube matlab like I can see this pen. This pen is what? Outermost covering is what? One tube. But if we take the inside part, there is one another smaller tube. So इस tube को इसके अंदर रखा गया है. So it will be what? Tube within tube body plan. ठीक? So same way our body is also composed of what? Tube within tube body planning. Means एक body के अंदर various other functions are going on. We have veins, vessels, nervous systems, various other organs and organ systems. So same way Aschelminthes have also inside their body digestive system is present, excretive system is present. Then echinodermata also show this, hemichordata also show this. So tube within tube body plan क्या है? एक पर्टिकुलर मेन बॉडी रहेगी, उस बॉडी के अंदर भी एक और बॉडी रहेगी जो एवरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है. सो दिस टाइप के बॉडी प्लान को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. अंडरस्टूड अबाउट दिस ट्यूब विद इन ट्यूब? अंडरस्टूड और नॉट? सना, फायका एंड ओके. सो अब इस ट्यूब विद इन ट्यूब का दो सिस्टम है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट? टू पार्ट्स. दो सिस्टम मींस प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. Protostomes and deuterostomes. So coming back to our what? Zygote and gastrula stage. Okay, how this proto and deutero are forming? इस लेयर, जब ये लेयर का फॉर्मेशन होता है ना, इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, और ये किस तरह से इनसाइड एंड आउटसाइड अपने आप को फॉर्म करते हैं. और उस इनसाइड एंड आउटसाइड फॉर्मेशन में इफ माउथ इज डेवलपिंग फर्स्ट, listen carefully, if mouth is developing first, then they will be what? Protostome. See, pro matlab what?
First, and stoma means always what? Mouth. And here deutero means what? Second. And stoma means again what? Mouth. So यहाँ पे क्या हो रहा है? Mouth first and यहाँ deutero what? Mouth second means second mouth. So जब ये गैस्ट्रुला के इनसाइड एंड आउटसाइड ओपनिंग के थ्रू अगर माउथ पहले फॉर्म हो रहा है, then that or those organism will be called as protostomes. And if इस गैस्ट्रोला स्टेज जो हमने देखा, उस गैस्ट्रोला स्टेज के इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट में एनस पहले फॉर्म हो रहा है, दैट मींस माउथ इज फॉर्मिंग सेकंड. ठीक, तो दोज ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज ड्यूटेरोस्टोम्स. नाउ प्रोटोस्टोम्स विल बी shown by from Aschelminthes. Aschelminthes. This protostome means Aschelminthes to mollusk. And this deuterostome means where mouth is forming second and anus is forming first. So they will be shown by Echinodermata to Chordata. Understood about this what body planning? कैसे बॉडी प्लानिंग हो रहा है? मीन सेल एग्रीगेट वाले पॉरीफेरा, ब्लाइंड सैक वाले में सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटिहेलमिंथेस, देन ट्यूब विद इन ट्यूब में एस्केलमिंथेस से कॉर्डेटा पूरा, बट अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. नाउ आई विल शो यू this with the help of diagram how this body planning is done. Animals have three cell aggregate planning shown by poriferans, blind sac is shown by Coelenterata to Platyhelminthes, and tube within tube is shown by Aschelminthes to Chordata. And now protostome in this mouth develop first. Mouth develop first from what? जब गैस्ट्रुला के स्टेज में ही इनसाइड एंड आउटसाइड मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोपोर होता है, तो उसमें अगर माउथ पहले फॉर्म हुआ है तो प्रोटोस्टोम एंड एनस पहले फॉर्म हुआ है तो ड्यूटेरोस्टोम. Example, Aschelminthes to mollusca, and here Echinodermata to Chordata. I was showing you the figure. See figure, ये cell aggregate plant कौन show कर रहा है? और sponges or we can say poriferans. So ये it is one of the example of is poriferan sponges. This is the figure of what? A sponge. So it a typical spongocele or we can say sponges are showing cell aggregation, means they are not forming tissues. They are only aggregation of cells, means cells are coming together and their division of labor is not found. Division of labor कहाँ होता है? जब टिश्यू सिस्टम आता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? Every cell is performing its own function. Now blind sac body plan. See, there is only one opening and ये माउथ की तरह भी काम करेगा और ये एनस की तरह भी काम करेगा. सो इसी से ही फूड का इंजेक्शन भी हो रहा है एंड इसी से अनवांटेड सब्सटेंसेस का इंजेक्शन भी हो रहा है. नाउ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एक एग्जांपल लिया गया है. सो इस अंदर देखो, ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी, बट इनसाइड दिस मेन बॉडी अनदर वर्किंग बॉडी प्रेजेंट है या वर्किंग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है. सो दिस वन इज व्हाट? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. Understood clearly about this tube within tube body plan or whole body plan system? How are they working? Then we will move to next point, which is coelom. From here only I will explain the coelom. See, coelom or we can say the body cavity. First of all, what is coelom? Definition से देख के बोल दो, what is coelom? Tell me, Sana, Faika or Purvant, what is coelom? What do you understand by the word coelom? See from figure also. What is coelom? Coelom is what? Body cavity. And body cavity is what? This body cavity is formed in between the mesoderm. Means two mesoderm. I have explained like this now. If we are taking like this. So ये जो एक inside की तरफ जो cell बनेगा, ये एक mesoderm हुआ towards the endodermal side. Now, if this mesoderm is forming towards the ectodermal side. So इसके बीच में जो ये cavity है, this cavity is called as body cavity or we can say coelom. क्योंकि जब बॉडी में पूरी सेल में पूरी फिट रहेगी सेल दोनों तरफ से या चारों तरफ से, लाइक इन दिस फिगर, अगर इसी फिगर में देखा जाए तो इफ यू आर वॉचिंग या सीइंग दिस फिगर, सो इस फिगर में कोई जगह है किसी बॉडी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के आने की. सो बेसिकली जब ये सेल बन जाता है या ये सिस्टम बन जाता है तो इसमें क्या होता है? जगह बनाने के फॉर मेकिंग बॉडी स्पेसेस, बॉडी में जगह बनाने के लिए टू प्लेस द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. क्योंकि अगर इसमें जगह नहीं आएगा, सो हाउ एन ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म. सो इस सेल में जगह बनाने के लिए व्हाट दे डू, मेसोडर्म, ये जो ये येलो वाला लेयर है, दिस लेयर divides means shift itself.
शिफ्ट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट इसका एक लेयर इंडोडर्म की तरफ जाता है एंड दूसरा लेयर किसकी तरफ जाता है, इक्टोडर्म की तरफ। और जो ये बीच में देन स्पेस जो हो जाएगा ना, ये पूरा स्पेस, ये यहाँ से बीच में जितना भी स्पेस बनेगा, होल स्पेस विल बी कॉल्ड एज बॉडी कैविटी और सीलम। और इसी बॉडी कैविटी और सीलम में देन ऑर्गन्स और ऑर्गन जो फॉर्म होते हैं, धीरे धीरे अपने आप को प्लेस करते हैं एंड धीरे धीरे ये पूरा एक जाइगोट नया ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन करता है। ठीक, सो यहाँ गैस्ट्रोडाइल स्टेज के बाद जो मीजोडर्म, इंडोडर्म और इक्टोडर्म बना है, उसमें जब मीजोडर्म जगह बनाता है, स्पेस क्रिएट करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, उस स्पेस या उस बॉडी कैविटी को हम लोग बोलते हैं सीलम। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि सीलम किसको बोलते हैं। बॉडी कैविटी, जैसे इसमें देखो ये मीजोग्लिया पूरा जगह है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें ये मीजो जब मीजोडर्म से फुल हो जाता है, जब मीजोडर्म अपने आप को शिफ्ट करके इनसाइड और आउटसाइड मींस एक एक्टोडर्मल लेयर की तरफ, एक इंडोडर्मल लेयर की तरफ शिफ्ट करके बीच में जो जगह क्रिएट करता है, उस बीच वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी और सीलम। ओके, अंडरस्टूड नाउ। ये जो बीच का पूरा स्पेस क्रिएट हुआ है, इस पूरे स्पेस को हम लोग बोल रहे हैं बॉडी कैविटी और सीलम। अंडरस्टूड सना एंड पाइका? यस मैम। ओके, सो अब इस सीलम में 3 टाइप्स के आएंगे, एज यू कैन सी, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स एंड सीलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। मींस these are having no coelom, they have coelom but in form of pouches, so इनको false coelom हम लोग बोलते हैं। ठीक, false coelom। एंड ये क्या है, true coelom, मींस पूरी तरह से बॉडी कैविटी या बॉडी स्पेस क्रिएट हो जाता है। सो दीज आर 3 काइंड्स, जहाँ पे एक में कोई सीलम नहीं है, एक में आधी तरह से सीलम फॉर्म हो रहा है, एंड द थर्ड वन इज ट्रू, यानी कि फुल सीधे तरीके से अच्छे से कैविटी स्पेस क्रिएट हो रहा है, जिसको हम लोग ट्रू सीलम बोल रहे हैं। सो दोज ऑर्गेनिज्म which are not having any coelom in them, Coelenterata to Platyhelminthes, means Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes are these organisms which are not having any coelom. ठीक, और only flatworm is written, so you can write Ctenophora and Coelenterata also. Coelenterata, flatworm is an example of Platyhelminthes, Ctenophora and Platyhelminthes. Okay, अब ये तीनों कौन सा फिगर शो दिखाएंगे, सेम वन, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है, ये सेम फिगर भी रहेगा किसके लिए, सीलम की तरह, क्योंकि इसमें कोई जगह ही नहीं है, मीजोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म से ये भरा पड़ा है, तो यही सेम फिगर किसके लिए जाएगा, यहाँ इनके लिए, सीलेंटेटा, टीनोफोरा और पॉलीफेरेंस के, सॉरी प्लैटिहेल्मिन्थेस के लिए ये फिगर जाएगा। सी, यहाँ पे जगह ही नहीं है, ये येलो पार्ट इज मीजोडर्म, दिस वन इज इंडोडर्म एंड दिस वन इज व्हाट, इक्टोडर्म। अब दिस सीडोसिलोमेट में, now in this figure there are pouches are being created, ectoderm, endoderm, mesoderm, pseudocoelom. Okay, ये figure not पूरी तरह से correct नहीं है, so don't pay attention to this figure. In this figure this mesodermal layer should not have been shown, so let me make corrections. Basically क्या होता है, one layer is of ectoderm, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा सेल से भरा है, other layer will be inside, जो कि इंडोडर्म है, ये भी क्या है, सेल से भरा है। अब यहाँ जो मीजोडर्म फॉर्म होता है ना, दैट मीजोडर्म्स आर फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ पाउचेस लाइक दिस, मींस मीजोडर्म अपने आप को तोड़ता तो जरूर है, अपने आप को शिफ्ट तो जरूर करता है, बट पूरी तरह से शिफ्ट नहीं करता। सी, अ लिटिल, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, पूरी तरह से स्पेस नहीं फॉर्म कर रहा है। सो ये जो पाउचेस बने हैं ना, ये मीजोडर्मल पाउचेस हैं। ठीक, ये पाउचेस की तरह फॉर्म होते हैं, जो कि पूरी तरह से स्पेस नहीं क्रिएट कर रहा है। दिस काइंड ऑफ सीलम इज व्हाट, सीडोसीलम। सो डोंट पे अटेंशन टू दिस फिगर, दिस फिगर इज लाइक दिस, फॉर्म छोटा छोटा पाउच की तरह फॉर्म होता है इन बिटवीन द इक्टो एंड इंडो वन। ओके, एंड नाउ दिस ट्रू सीलम मींस कि ये जो पूरी तरह से सीलम फॉर्म हो चुका है, दिस मेसोडर्म हैज क्रिएटेड होल न्यू स्पेस, होल न्यू स्पेस मींस body space for the formation of organ and organ systems. Okay, and this will be included in annelids, mollusca, arthropoda, echinodermata, chordata. See, annelida to chordata. And this pseudocoelomate is shown by Ashkelminthes only, and not any other phylum will show this pseudocoelom. Okay,
So this example is Ashkelminthes, this example is Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes, and these examples are from Annelida to Chordata. Everyone will show true coelom, and pseudocoelom will be shown by Ashkelminthes. Acoelomates means no coelom formation is shown by Coelenterata, Ctenophora and Platyhelminthes. So this coelom part is also being taught. Now I think what is left? I have to go through this one. What is left after pseudocoelom? Okay, symmetry here. Again, two type of symmetry will be shown by organisms of animals. One will be asymmetrical and other will be symmetrical. And further, the symmetrical one is divided into radial and bilateral. So asymmetrical body plan will be shown by porifera, means जिसका body divide नहीं हो सकता like this. See, इसको body को अगर तुम divide भी करना चाहो तो equal part में कभी division नहीं होगा. So ये क्या है? Poriferans है. These are poriferans. Now coming back to radial symmetry, and symmetry means जहाँ symmetry present है means जहाँ body को equal halves में divide किया जा सकता है. So radial symmetry and bilateral. Radial symmetry मतलब कितने भी पार्ट में कहीं से भी काटो वो दो हाफ में डिवाइड होगा. एंड बाइलेटरल मींस कि एक मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, सेंटर से ही उसको क्रॉस करना पड़ता है या सिमेट्री ड्रॉ करनी पड़ती है. ठीक. सो रेडियल सिमेट्री इज बीन शोन बाय these Coelenterata, Ctenophora, and here Echinodermata. See, Echinodermata adult form will show this radial symmetry, not larval form. मीन्स कि इनका लार्वल स्टेज ज्यादा एडवांस होता है एंड एडल्ट स्टेज कम एडवांस होता है. एडल्ट स्टेज लाइक यू कैन सी स्टारफिश विल शो रेडियल सिमेट्री. स्टारफिश एंड अदर sea fish and echinida, many are there. So echinoderm का adult formation जब होगा तभी वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा. अदरवाइज उसका जो लार्वल फॉर्मेशन है वो यही बाइलेटरल सिमेट्री ही शो करेगा. इकाइनोडर्म्स में एक फीचर है, स्पेशल फीचर ये है कि इनका जो लार्वल स्टेज है वो मोर एडवांस है एंड इनका जो एडल्ट स्टेज है वो कम एडवांस है. ओके. सो अगेन सी एनिमोन्स एग्जांपल इज आल्सो देयर. सी एनिमोन्स will come only this Echinodermata. Adult sponges are asymmetrical, however they start their life from radial symmetry larva. See, larval stage radial symmetry show कर रहा है किसका? Sponges का. Sponges will come in what? Poriferans. So poriferans का adult stage is asymmetrical but their larval stage is radially symmetrical. So you have to remember this point. Again, bilateral symmetry is shown by platyhelminthes to chordate. That means कि उनका body two equal halves में divide हो सकता है whenever you will cut. Okay, we will keep the class up to here today, up to the symmetry. Okay, how many points are left? Symmetry, segmentation, notochord. Okay, these are very small point. Let me explain all. Okay, this segmentation and notochord here. Segmentation means कि body का छोटे छोटे parts में division होना, internally and externally both. ठीक. इसी के बेसिस पे सेगमेंटेशन का डिवीजन भी है. मींस मेटामेरिक एंड सीडोमेटामेरिक. सीडोमेटामेरिक में सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल है जो सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन शो करता है एंड इंटरनली नहीं करता. अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड पॉडेट्स, दे शो this metameric segmentation, that is true segmentation. They show what? True segmentation. Metameric segmentation or true segmentation means their body is divided into segments. Like you see, our body is divided into head, then we have a whole body, middle part, then we are divided into legs, hands, everything. Same way, if you are seeing in the figure also, their body is divided into various small segments, these metamers. So these segments are what? Metamers. इस segments को हम लोग क्या बोल रहे हैं? Metamers. सो यही मेटामर्स का जो पूरा एक ऑर्गन फॉर्म कर रहा है, इसी की वजह से इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन कह रहे हैं. सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन विल बी शोन बाय एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स. सेम वे सीडोमेटामेरिज्म, दैट मींस कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड है, इंटरनली नहीं डिवाइडेड है, will be shown by one organism that is found in Taenia solium, that is in tapeworm. And tapeworm का बॉडी बाहर से डिवीजन शो करता है बट अंदर से नहीं. अंदर से इसका ऑर्गेनिज्म में कोई मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं दिखता है. ठीक. एंड दिस टेपवर्म इज बिलोंग टू व्हाट? प्लैटीहेलमिन्थेस. नाउ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इज व्हाट? इट इज mesodermally derived rod like structure.
यही नोटोकॉर्ड मीन्स अभी जब कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 4 बेसिक फीचर है जो कॉर्डेटा को कॉर्डेटा बनाता है। मीन्स अगर वो 4 बेसिक फीचर कॉर्डेटा में ना हो तो क्या कहते हैं, वो कॉर्डेटा नहीं कहलाएगा। सो सेम वे दिस, देखो सी 4 basic feature also given: notochord, dorsal hollow nerve cord, pharyngeal gill slit and post anal tip. Every chordate, जितने भी कॉर्डेट हैं, दैट इज फ्रॉम पाइसेस टिल ह्यूमंस, उनके जाइगोट लेवल मतलब जाइगोट से फॉर्मेशन में या एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं किसी भी स्टेज में ये चारों चीज जरूर दिखेगी। मींस पोस्ट एनाल टेल का फॉर्मेशन, फेरेंजियल गिल स्लिट का, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। दिस नोटोकॉर्ड हायर एनिमल्स में रिप्लेस हो जाता है किससे? होल स्केलेटल सिस्टम एंड रिब्स से, एंड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड क्रिएट करता है नर्वस सिस्टम। देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स फिशेस में फॉर्म हो जाते हैं गिल्स, एनिमल्स एंड अदर हायर एडवांस में लंग्स एंड ब्रीदिंग सिस्टम फॉर्म हो जाता है। पोस्ट एनाल टेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है टेल वाले उसमें पोस्ट एनाल टेल रह जाता है। बाकी हायर एनिमल्स में ये टेल क्या हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता तो है बट आगे चल के वो शॉर्टली खत्म हो जाता है। ठीक, सो नोटोकॉर्ड जिसमें भी प्रेजेंट होगा वो कॉर्डेट कहलाएगा, एंड जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन कॉर्डेट। सो विदाउट animals without notochord are what? Porifera to hemichordata, and with notochord are chordata. Understood about this 7 bases of classification. Notochord जिसमें होगा वो जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं सारे में ये चीज एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि पॉरीफेरा से हेमीकॉर्डेटा तक इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होगा, एंड एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में शो होते हैं। Is there any doubt in understanding today's lecture? Because today and tomorrow's lecture will be very important. Sana, Faika and Purvank. Purvank, are you there? Okay, I think he is not there. So Sana and Faika, are you having any doubt in understanding any of these topics? Segmentation or notochord or body or coelom or diploblastic, anything in this whole classification system? No, ma'am. Okay. Notochordata. Notochordata na notochord. So abhi we will keep here till I will explain you in the later classes. नोटोकॉर्ड भी बहुत बड़ा, अभी जब कॉर्डेट पढ़ेंगे ना तो नोटोकॉर्ड को आई विल एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। यहाँ पे बस इतना जान लो कि नोटोकॉर्ड एक मीजोडर्मली रॉड लाइक स्ट्रक्चर डिराइव होता है जाइगोट स्टेज। ठीक है, जाइगोट स्टेज से जब गैस्ट्रुला ब्लास्टुला बनता है ना उसमें होता है और वो फॉलो होता है। तो अभी बस ये याद रख लो कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें प्रेजेंट है वो कॉर्डेटा कहलाता है, और जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो सारे नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। और नॉन कॉर्डेट्स कितने हैं? 10 हैं, पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा। योर होमवर्क इज टू लर्न all the non-chordates in a serial wise manner, and tomorrow I will ask कि serial wise manner में हमें नाम बताओ। Okay, so bye for today. Bye Faika. I'm going to stop sharing this.